अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई थॉट मुझे आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहिए ये जो 5 एजेस से और 3 एजेस से मूव करने का। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ से अपने स्नैप ऑन कर रहा हूँ, स्नैप टू ग्रिड सेट कर रहा हूँ ताकि ग्रिड के ऊपर मेरा क्लिक हो हमेशा। तो यहाँ से हम लोग अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। मैंने जी एक्सिस ऑफ किया हुआ है, एक्स और वाई में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ऐड करता हूँ लेट्स सपोज एक प्लेन। तो प्लेन ऐसे मैंने ऐड किया है। अब मैं सबसे पहले 3 to 1 की एग्जांपल आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू द एडिट मोड। इसके सब एडिटिंग के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर एडिट करना है, तो लूप कट लेने के लिए प्रेस कंट्रोल आर, कर्सर मूव किया मैंने माउस को ऊपर, दो दफा इंसर्ट किया, राइट क्लिक पे एग्जैक्टली सेंटर इंसर्ट हो जाएगा। देन आई वांट टू नाउ मुझे ये 3 एजेस से यहाँ पर इसको एक एज पे लेके आना है। तो आई डिवाइड इट हाफ फर्स्ट। सो लेट्स इंसर्ट वन क्लिक और मूव एज लाइक दिस, राइट क्लिक। नाउ आप देखें कि मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर ये क्वाड्स हैं सारे, तो मुझे ये जाहिर करने के लिए कि ये ज्योमेट्री को क्या हो रहा है, आई शुड एनेबल माय स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम हियर। अब देखिए मैं अगर किसी भी फेस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 4 वर्टिसेस 4 एजेस ये शो कर रहा है। एवरीथिंग ओवर हियर इज अ क्वाड। ओके, कोई भी ज्योमेट्री क्वाड्स के बगैर सारी क्वाड्स हैं यहाँ पर। तो जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है, तो मेरे पास आई शुड डू दिस इन अ वे दैट मेरे पास क्वाड ही बाकी बचे। तो आप देखें कि मुझे इसको और इसको पोल बनाना पड़ेगा। अब ये क्वाड है, ये पोल जो है, ये जो वर्टेक्स है 4 तरफ जोड़ रहे हैं, मुझे इसको क्वाड पोल में कन्वर्ट करना है, 3 साइड पे जुड़ेगा। तो व्हाट शुड आई डू दैट? सिंपलेस्ट मेथड इज मुझे इसको और इसको मिला देना है आपस में। तो या मैं 2 एजेस को डिलीट कर देता हूँ। आई विल सेलेक्ट दिस एज एंड शिफ्ट होल्ड दिस एज। मैं उसको कोलैप्स करता हूँ, कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डिलीट प्रेस करने से देखें क्या हुआ है कि जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें इसका कोई भी यहाँ पर वर्टेक्स बाकी नहीं आया। अगर मैं इट इज़ नॉट अ क्वाड एनीमोर, ठीक है, इसके नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इट ज़्यादा हो गए हैं। इसका आपकी निशानी ये है कि अगर आप यहाँ से लूप लें, यहाँ पर लूप कट लें और आप लूप कट को गुजारना चाहें, तो देखिए वर्टिकली गुजर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली सिर्फ यहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि ये क्वाड नहीं है तो इट डज नॉट फ्लो। एज फ्लो नॉर्मली मूव नहीं करता। व्हेन जब आपके पास क्वाड्स ना हो तो एज फ्लो मूव नहीं। अगर मैं इसको वर्टेक्स को मूव करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, आई विल वर्टेक्स इसको और मर्ज करता हूँ, मैच बाय वर्टिसेस कोलैप्स। सो अगर मैं इस पे मूव कर दूँ तो इट्स पोजीशन अगेन, use this, select this tool and match large vertices, collapse, और इसको position. So if I select now base here, so this base is 4-sided and 4 vertices, everything is 4-sided and 4 vertices. तो now इसकी पर दोबारा से इसको चेक करना चाहें हम लोग कट में जाते हैं, तब देखें वर्टिकली फ्लो हो रहा है और वर्टिकली फ्लो हो रहा है, और ये हर दफा सेंटर से मूव हो रहा है। Every direction that is flowing, which means that the geometry is loops are in flow, so there is no breakage in all quads. So अभी हम 5 एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको हल कर देता हूँ। मैं इसका come out of this object mode, इसको hide कर देते हैं और एक प्लेन है और ऐड करते हैं। इसके एडिट मोड में जाते हैं हम लोग और एडिट मोड में जाके हम लोग उसी तरह से इसको फिर दोबारा से लूप कर डालते हैं। हम चाहते ये हैं कि ये 5 से 3 मूव करें, 5 से 3 मूव करने के लिए लेट्स गो टू दिस वर्टेक्स and select the vertices. Let's move them a little bit down. Okay. और इन दोनों को हम लोग after that हमें हर दफा पोल डेवलप करने हैं।
करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम देखें अगर हम दो वर्टेक्स से तो हम पहले इस वर्टेक्स को इस एज को डिलीट करते हैं इस एज को and should select this edge ऐसे इसको select करते हैं dissolve कर देते हैं control delete से और next में हम vertex को select करते हैं okay तो for example हमारे पास ये तो पोल बन जाएगा तो एक दो तीन और चार अगर हम ये साइड खत्म कर दें तो क्या करते हैं कि इस साइड ठीक है और इसको कंट्रोल से मर्ज कर देते हैं collapse सेम काम करते हैं और collapse इसको करते हैं इसको होना चाहिए तो अब देखें अगर हम collapse तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं select करूँ उनके faces को तो select the face here और चार और चार है तो chord so now अभी तीन से पाँच और जिससे तीन तो अभी कौन से देखते हैं वो इसके फिर इसी तरह टैगेट को हो जाते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और इसको चार करते हैं पहले हम लोग ऐसे करते हैं दो से दो से अंदर जाना है तो to do that we need to split it now इसको इस तरह से split करना है प्रेस करना है टू से जाने के लिए मैंने क्या किया हमें इसको दोनों इसको करना पड़ेगा तो let's do that and vertex select करते हैं select करते हैं merge करते हैं collapse तो आप देखें ये 2 से 1 में कन्वर्ट हुआ है अगर हम इसका एज को चेक करें तो देखें एज को इस ऊपर है इस ऊपर है और यहाँ से हर डायरेक्शन से इसका एज को ऊपर है इस ऊपर है बिकॉज अगर हम ये सेलेक्ट करें क्वाड है ये भी क्वाड है so let's do example of 4 मोड में करते हैं इसी तरह से डालते हैं इसके इस तरह फिर हम लोग वही करेंगे काम जो हम लोगों ने 2 से 1 किया था पोस्ट को जाने के लिए हमारे पास 2 पोस्ट बने हैं इसके अंदर तो हम लोग इस लाइन को इसके साथ दरमियान वाली है हम लोग बॉटम वाली है कर देते हैं select this one and control delete to drop it and next the vertex है कोई बाकी नहीं बचा good okay so then move this this vertex to here मेरा ख्याल है कि हमें सेंटर वाली लाइन नहीं करनी चाहिए let's do that
So हम लोग सिर्फ ये करते हैं broadcast के select this vertex, we go to vertex mode, select this vertex, and we move it here. Okay, and but this will we have to get rid of this line. Select this edge. Select this vertex, move it here, here, and similarly this one here. But हमें इस edge से इसको करना है. Select this edge like this, and this press Ctrl to resolve it. And now you can just select these two vertices and merge करते हैं, collapse and move them to position. Here, Ctrl delete and that. So delete की बजाय dissolve collapse करते हैं like this. So अब देखिए कि ये चार edges जो हैं वो टू में कन्वर्ट हो चुके हैं. अगर हम इसको चेक करें कि क्या क्वाड है, सारे ही क्वाड्स हैं यहाँ पर. और इनकी और को निशानी ये है कि अगर हम यहाँ से लूप कट लेते हैं, उसको मूव करवाते हैं, तो हमारी हर डायरेक्शन में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पूरा फ्लो जा रहा है, किसी जगह से फ्लो रुक नहीं रहा है हमारा. तो दिस इज द गुड फ्लो ज्योमेट्री like this. So I hope you understand that. It will help you to in future to solve these. So this is how you will make conversion of edges from large number to